Hello everyone, good afternoon. Madhu sir, welcome to the last session of the week. I hope you can hear me clearly. Okay, now this is a surprise. Sir, can you hear me? Sir, you are on mute. Yes, now I Yeah, can now hear I you can hear clearly. you. Can you hear me? Great. So you can share your screen. Meanwhile, I'll just do the introductions and then we are good to go. Sure, I'll just take a minute for setting up the frame. Good afternoon, everyone. Welcome to the last session of the week. My name is Anuj Sharma. I am your community manager, and today we have Mr. Arpit Beriwalsa with us for the last session of the week. We'll start with a quick market outlook. Obviously, starting with the index options, seeing a possible trade in the options, and if not, then we'll move towards stock options. We'll share the BTST, some intraday trades, and then we'll take up some stock queries. आप क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं, पर अगर हमारा फोकस ज्यादा ऑप्शंस पे नहीं होगा तब हम स्टॉक क्वेरीज पे फोकस करेंगे, और एल्स वी फोकस ऑन आवर options discussion and analysis only, like always. I can see people joining in and they have their queries also ready. So welcome Arpit sir, we are all set, handing it over to you. Yeah. So very good afternoon, guys. We have seen a shift in the weekly expiry play for the Sensex, and going forward, we'll be having from instead of Friday, we'll be having on Tuesday. And if we see this couple of days has been a roller coaster ride for the market, especially for the indices and the broader market. So starting with the flow for the session would be starting with the Nifty Bank Nifty outlook, followed by the broader market outlook, which sectors are looking promising, which sectors are looking weak, कौन से सेक्टर्स में तेजी कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में मंदी रह सकते हैं, followed by stock options की किसमें momentum है, and overall market breadth wise. So a lot of things are there to start with. First and foremost, first we'll start with Nifty, as that is the benchmark index. If you see, benchmark index has been in bleeding from last couple of days. If you see from last couple of weeks, if you see the positionally setup wise, weekly is in downtrend. एंड हम काफी टाइम से निफ्टी को ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज देखें तो नेगेटिव ही प्ले आउट कर रहे हैं. कभी कभार बाउंसेस आ रहे हैं कपल ऑफ डेज में, बट अगर आप बड़ा ट्रेंड देखें मार्केट का तो अभी भी पेन में है. तो स्टार्टिंग विद निफ्टी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज अच्छी पुल बैक देखी थी हमने 23,500 से टुवर्ड्स 24,200 लास्ट वीक. हाउएवर वो लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और पिछले 5 से 6 दिनों से वापस हमने 600 से 700 पॉइंट की गिरावट देखी है. एंड इसके साथ हम देखें तो काफी मेजर सेलिंग प्रेशर जो है स्टॉक्स में है. इसी के जब तक 23,550 23,600 23,600 के नीचे जब तक रहता है क्लोजिंग बेसिस पे, हमारा स्टैंड नेगेटिव रहेगा फॉर 23,333 एंड देन 23,200 23,000 जोन्स. सो ओवरऑल सेल ऑन बाउंस की स्टैंड ही रहेगी निफ्टी में. आज भी हमने पॉजिटिव ओपनिंग देखी बट शार्प करेक्टिव मूव देखा, देन पुल बैक देखा एंड देन अगेन करेक्टिव मूव, एंड दिस हैज बीन द नेचर फॉर द मार्केट फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज. इसके साथ हम एक चीज और ऐड करें, सो जनवरी सीरीज है, जनवरी सीरीज नोन फॉर इट्स वोलेटिलिटी अहेड ऑफ बजट. A lot of global events are there, a lot of domestic events are there, quarter earnings season has already kick-started, so a lot of things are going on. With the view of Nifty, a stance is negative till it holds below 23,600 levels. इसी के साथ हम अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, so बैंक निफ्टी has seen a free fall in last 1 week. बैंक निफ्टी is almost down by 2,500 points in last couple of sessions. So अगर ये आप स्क्रीन देख रहे हैं और आपको विजिबल है, so अगर आप ये जो ब्लू लाइन है ट्रेंड लाइन, उसको जब ब्रीच किया, वहां से हमने ऑलमोस्ट 1400 से 1500 पॉइंट का करेक्शन देख लिया बैंक निफ्टी में, फ्रॉम 50,500 टू 48,750. अभी भी नियर डेज लो के वहीं है. एंड मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं इस फॉल में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई. सो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो वीकली स्केल पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, डेली स्केल पे लोअर हाइज लो लोज बना रहा है, अपने 200 डेमा के नीचे आ गया है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अपर बैंड पे सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लेवल्स प्ले आउट करना. सो बैंक निफ्टी में भी हमारा स्टैंस नेगेटिव है जब तक 49,500 के नीचे रहता है. ऑल्सो गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज हमें शेयर भी करनी थी, जैसे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी फ्रॉम 51,500 इज करेक्टेड टुवर्ड्स 48,000 लेवल्स. सो आपको धीरे धीरे जो स्टॉप लॉसेस या जो रिवाइज है वो आपको नीचे करने पड़ेंगे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा. सो हम अगर सेटअप वाइज देखें तो जब तक प्रीवियस डे का हाई नहीं निकलता बैंक निफ्टी, हमारा बायस नेगेटिव रहेगा.
14,500 एक मेजर हर्डल जोन है, जब तक इसके नीचे सेलिंग प्रेशर ही रहेगा टुवर्ड्स 48,500 48,000 लेवल्स। मेजर जो पेन में रहा है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हैज ऑलमोस्ट करेक्टेड 6% इन दिस वीक फ्रॉम ऑलमोस्ट 1750 टू 1650 लेवल्स। सो करंट मार्केट के सेटअप के बारे में भी बात करें, इंडिया विक्स में भी थोड़ा सा हमने स्पाइक देखा है। एंड इंडिया विक्स में अगर हम देखें, जनवरी सीरीज जनरली एक हायर बेस पे रहता है बिकॉज ऑफ बजट। आज हमने 2.5 से 3% का स्पाइक देखा है, बट ब्रॉडर मार्केट जो सेलिंग है वो काफी इंटेंसिफाई है। सो गाइस थोड़ा सा कॉशियस होके पोजीशन लाइट रख के हेजिंग करके हमें प्ले आउट करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर मार्केट, today this week broader market has been in huge pain. So the mid cap and small cap indices are down by 4 to 5%. and आज अगर स्टॉक्स में सेलिंग देखें तो काफी भारी गिरावट है मेजर न्यू एज कंपनीज में। सेक्टर्स आप कोई भी ले जाए अपार्ट फ्रॉम आईटी, all other sectors in deep pain and that is clearly visible on the screen. So guys ट्रेंड जो है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज ट्रेडिंग एक अलग है, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। सो अगर आप लोगों ने कोई ट्रेडिंग के लिए बैठ लिया है, प्लीज मैनेज योर पोजिशंस, बाय पुट्स, बाय हेज योर पोजिशंस, तो कर सकते हैं। Now coming back to the overall broader market sector specific, so अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो खाली एक आईटी इंडेक्स है जो relatively strong होल्ड किया है, mainly post the outcome of TCS रिजल्ट एंड इन्फोसिस, TCS, HCL टे काफी स्ट्रॉन्ग है। पूरे मार्केट के लास्ट 2 to 3 मंथ के फॉल में भी निफ्टी आईटी इंडेक्स इज ट्रेडिंग इन लाइफ हाई टेरिटरी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि काफी आउट परफॉर्मेंस है और गोइंग फॉरवर्ड आल्सो फॉर कपल टू 3 to 4 मंथ्स ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। तो फुल मार्केट के ब्रेथ में अगर हम देखें तो एक सेक्टर जो हमारा आउट परफॉर्मिंग लीडिंग है वो है आईटी सेक्टर। उसी में भी हमारे जो स्टॉक्स है इन्फोसिस और एचसीएल टेक दोनों रिलेटिवली प्लेस है। सो आई थिंक पोजिशनली अगर आप सेटअप वाइज देखें, सो इन्फोसिस, एचसीएल टेक ट्रेडिंग एट लाइफ हाई टेरिटरीज। पहले हम इन्फोसिस के बारे में बात करें, सो मंथली स्केल पे कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली स्केल पे मल्टीपल हैमर्स बना के पुल बैक देगा हमने नीचे के लेवल से, मार्केट की वीकनेस के बाद अपने गेन्स को होल्ड किया है। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैक विद इन द आईटी पैक, इन्फोसिस वुड बी अ प्रेफर्ड पिक। एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड हेवी वेट्स में आप पोजीशन बनाए रखे बेटर रहेगा बिकॉज मार्केट की वोलेटिलिटी काफी है। सो इन्फोसिस एक हमारा सीरिया आइडिया रहेगा फॉर 10 to 15 डेज। 1950 से 1960 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 1890 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2050 के टारगेट के लिए इन्फोसिस पे हमारी बाय की सलाह रहेगी। दैट वाज फ्रॉम द पॉजिटिव सेक्टर इन द आईटी सेक्टर। नाउ इफ यू लुक एट द ब्रॉडर मार्केट वीकनेस वाइज, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एनर्जी स्टॉक्स हो, चाहे वो सिलेक्टिव ऑटो हो, सभी पेन में है, चाहे वो बैंकिंग हो। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट वाइज में काफी पेन है। एंड व्हाट विल डू, हम ट्राई करेंगे स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी को प्ले आउट करने के लिए। सो वी आर स्कैनिंग द स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग वीक एंड विल अपडेट ऑन इट। इन द मीन टाइम अनुज हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज एंड विल लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज की एचटीबीटी और बीटीएसटी आइडियाज क्या बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम अपडेट करेंगे। Sure, sir. I'm just repeating our Infosys trade CDI 1960 per buy, 1890 per stop loss, and the target will be 2050. Absolutely. So you view on Axis Bank? Yes. So within the banking space, as our outlook overall for the banking index has been weak, and this is clearly visible on all time frame chart. If I open the chart of Axis Bank also, let me open up the weekly chart. Stock last quarter earnings के बाद से एक डाउन ट्रेंड में आ गया था एंड पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्तों में एक डाउन ट्रेंड में ही है। डेली स्केल पे देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है 1000 से लेके 1070-60 की रेंज में। सो सेटअप वाइज अभी भी वीक है वीकली स्केल पे, एंड जब तक 1000 तब तक बायस वुड बी नेगेटिव। सो बेटर है, या तो आप बाउंस पे आ रहा है तो बेटर है एग्जिट कर लीजिए, और या तो ऑलरेडी पोजीशन है तो 1010 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, ये काम करें। Sir, your view on Titagarh buying level at the current price? Titagarh rail systems, right? Yes, sir. Yeah. Asking like, should we enter now? Okay, so if I see the overall market texture, so why I started this session with a broader market outlook, because the broader market, if we see holistically, the advanced decline ratio NSE 500 is totally in bear grip. So majority of the counters are in bear grip. अगर हम टीटागढ़ का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखें वीकली एंड द डेली स्केल, अभी भी कोई चार्ट पे मेजर रिवर्सल नहीं है। फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक डाउन ट्रेंड में ही है। डेली स्केल
DCB Bank bought at 128 6 months ago. What is your view? DCB Bank 128. Yes, sir. Okay. So if I see the chart setup of DCB Bank on the weekly time frame, last couple of weeks is totally in downtrend from last 5 to 6 weeks from 130 to 115 levels. अगर हम previous support zone के वहां देखें तो 110, 111 के नीचे hold the stock. एक सौ दस आप लेवल्स ध्यान रखिए 1110 वीकनेस रहेगी तब तक एक साइडवेज काउंटर है. Sir, ICICI Bank. Similar counter, one of our favorite counter within the banking space, but as we say, this time the bears grips are quite strong, and chart wise also relatively ICICI Bank is very strong within the banking space. However, immediate basis पर अगर देखें, because of steep correction in banking stocks, we have seen a correction from correction in ICICI Bank also. 1300 से करेक्ट हो गया 1250. ओवरऑल काउंटर जो है एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता है. 1220 1230 एक मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 1300 का हर्डल है. सो आई थिंक ये काउंटर में जैसे सपोर्ट के पास में आता है 1230 1235, वहां पे हमारी ऐड करने की सलाह रहेगी. 1215 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर वापस 1270 1280 के लिए. सो ओवरऑल सपोर्ट जोन के पास में बाय करें. 1230 वुड बी अ गुड बाइंग जोन. 1210 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 1280 1290 के लिए. Sir, NFI 2000 call bought at 32.5. Your views and target? In fee 2000 call, right? Yes. Yeah, so overall setup wise, next we have the result season, that is on 16 January will be the result. Setup wise, definitely IT sector is outperforming. So our view is positive on the same for Infosys. Continue to hold the call because month का भी start हुआ है. And setup wise अगर आप देखें जब तक ये 1920 1930 के ऊपर क्लोजिंग देता है कॉल के लिए, आप कॉल को होल्ड करके रखें. ध्यान रखिए रिजल्ट के पहले अगर मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स. सो एज ऑफ नाउ होल्ड द कॉल till spot levels Infosys closes above 1930 levels. So overall bias positive है. इसी के साथ अगर हम एक स्टॉक के बारे में बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस के लिए, सो मार्केट में काफी वीकनेस है और हमें स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू हम डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं. सो रियलिटी पैक में अगर हम देखें, सो रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा पेन है. एंड अगर हम उसी में अगर देखें गोदरेज प्रॉपर्टी, सो गोदरेज प्रॉपर्टी का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, सो काफी पेन में है. वीकली स्केल पे एक रेंज ब्रेकडाउन दिया है 2500 के नीचे. स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन 3 to 4% टुडे, बट सेटअप वाइज हमें लग रहा है कि यहाँ पे 2450 के नीचे क्लोजिंग रहती है. सो यहाँ से हमें और पेन दिख सकता है. सो इसके लिए हम पुट ऑप्शन की सलाह देंगे गोदरेज प्रॉपर्टी का. अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी 2400 2405 के अराउंड चल रहा है. इसी में अगर हम देखें 2400 का जो पुट है अभी 73 74 चल रहा है. सो आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टी में हमारी इसमें बाय की सलाह रहेगी पुट की, जो हमें डाउनसाइड प्ले करना है टुवर्ड्स 2350 2340 के लिए. सो 70 से 70 से 72 के रेंज में आप गोदरेज प्रॉपर्टी का पुट बाय कर सकते हैं. 48 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 105 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी में पुट के थ्रू हमारी बाय करने की सलाह है. Sir, review on BHEL. BHEL. Yes, sir. Yeah, so if you see overall the sarkari stocks, the government stocks are in downtrend totally from last couple of months. If you see overall also technically also weekly scale पे lower highs का structure intact है. Range breakdown दिया 210 के नीचे, strong bearish candle बनाया है. And हमें लग रहा है यहाँ से भी I think as of now chart पे कोई major reversal नहीं है. So if you are holding it, guys, please hedge your positions by buying put. अगर आपने फ्यूचर्स में होल्ड किया है, कैश में अगर होल्ड किया है, सो 200 का लेवल आप देखें, 200 के नीचे और सेलिंग प्रेशर दिख सकता है बेयर काउंटर में. सो 200 का सपोर्ट है, फ्रेश विटनेस बिलो 200, अपसाइड में 212 का हर्डल है. Sir, your view on REC? REC, mid caps and small caps have been in pain this week, and that is clearly visible in our screen also. अगर आप देखें तो आज almost 4 to 5% stocks, 4 to 5% on average stocks down है. REC के बारे में बात करें, similar price structure in downtrend, weekly scale पे lower highs, daily scale पे lower highs. अगर आप देखें daily scale पे range breakdown दिया है 470 के नीचे, strong bearish candle बनाया है. नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है बिलो 458 इज 444.
REC में भी अभी कोई रिवर्सल नहीं है, वीकनेस है टुवर्ड्स 450 444 तक का, सो REC में भी बायस नेगेटिव ही रहेगी 465 का। और Sir, any stocks for BTST as of now? Yeah, so we'll update Anuj because we are looking for the opportunity where the probability is high and the setup should be good. अगर हम ओवरऑल मार्केट ब्रेथ के बारे में थोड़ा सा प्लेन है, जिसके वजह से हम बहुत सिलेक्टिव है। हमने जैसे डिस्कस किया कि खाली आईटी इंडेक्स और सिलेक्टिव टेलीकॉम और सिलेक्टिव फाइनेंशियल स्टॉक्स में मोमेंटम है, बाकी एडवांस इक्विटी रेशियो नेगेटिव ही है। सो विल सी फॉर द सेटअप। सो फार हमने एक सीडीआई कॉल दिया है, एक स्टॉक ऑप्शन का गोदरेज प्रॉपर्टी का पुट दिया है, और इसके साथ अगर हम सेटअप देखें सो जैसे भी अपडेट मिलेगा हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बिकॉज इवन वी वांट टू प्ले द अपॉर्चुनिटी। बट अभी अगर आप देखें तो ओवरऑल एक बोलते हैं ना तूफान जैसा चल रहा है मार्केट में, जिसमें 100 काउंटर में 90 काउंटर डाउन ट्रेंड में है और खाली 8 से 10 काउंटर पॉजिटिव है। सो जनरली इट्स बेटर कि थोड़ा पोजीशंस लाइट रखें, बट या वी सी एनी अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली अपडेट ऑन इट, बट सो फार वी आर लुकिंग सेटअप। couple of things more I would like to add for the indices and one overall setup wise. So if you see the setup wise, Nifty, Bank Nifty both are in downtrend, and guys, if you see January series historically has been downwards or kind of volatile series, and ये अगर आप start of the series से देखें, after 2nd January again we have seen a sharp corrective move. So guys, this entire month is likely to be this. So better आप जो positions है try करें थोड़े से intraday या जो swings है उसको आप play करके ही play out करें। एवरीडे अगर आप देखिए तो बड़ा मूव होता है, फिर डाउन ट्रेंड हो जाता है, फिर अपटिक हो जाता है। सो इफ यू सी द बिगर ट्रेंड इज क्वाइट वॉलेटाइल, सो बेटर है कि आप जो इंट्राडे पोजीशन से उसको आप प्ले आउट करें। एक जो एसटीबीटी हमने जो टर्मिनल पे है वो है सीडीएसएल। सो अगर हम सीडीएसएल देखें तो काफी हम बुलिश थे पिछले काफी टाइम से, पर अगर आप देखें तो न्यू एज कंपनीज, ऑल द डिपॉजिटरीज, ऑल द एक्सचेंजेस लास्ट कपल ऑफ टाइम डेज में हमने एक अच्छा खासा वीकनेस देखा है सीडीएसएल और सब मेजर स्टॉक्स में, पॉलिसी बाजार, पेटीएम। सीडीएसएल इज वन ऑफ एसटीबीटी आइडिया। 1610 1612 की रेंज में सीडीएसएल फ्यूचर्स आप सेल करें, 1640 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे 1560 के टारगेट के लिए। सो दैट इज वन एसटीबीटी आइडिया सीडीएसएल। एक हमने गोदरेज प्रॉपर्टी का पुट भी दिया है, एक लॉन्ग आइडियाज में इंफोसिस का सीडीआई कॉल दिया है। सेक्टर वाइज हमने डिफाइन किया है, आईटी इंडेक्स ही आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी सेक्टर वाइज अगर हम देखें स्पेशली, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बैंकिंग हो, काफी पेन में है। सो आई थिंक गाइस सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक में ही रहिए, दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट। एंड मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है, ओवरऑल एक बेयर्स ग्रिप में है, सो लेट दैट ट्रेंड फॉलो एंड प्ले आउट दैट ट्रेंड, दैट वुड बी बेटर। जो भी आपकी पोजीशंस भी है काफी डेफिनेटली गाइस पोजीशंस भी रहेगी आप लोगों की। सो अगर आपकी लेवरेज पोजीशंस है, आर एडवाइस अगर वो पेन में है, बेटर टू हेज दैट पोजीशन थ्रू पुट्स अगर वो एफएनओ स्पेस में है। एंड अगर वो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लिया है सो बेटर आप स्टॉप लॉस उसमें फॉलो करें। सो एसटीबीटी वी शेयर एनी बीटीएसटी आइडिया अनुज विल बी देयर, विल डेफिनेटली अपडेट ऑन इट। वी कैन टेक बैक फ्यू स्टॉक क्वेरीज। एंड अगर हमें जो गोदरेज प्रॉपर्टी का पुट दिया वो थोड़ा सा हमने स्पाइक भी देखा है, 73 वाला 80 हुआ है। So guys, this is the kind of spike that we are getting and we are noticing. So जो भी opportunities रहेगी हम definitely update करेंगे। Couple of stock queries we can take and I am looking out for more put opportunities through stocks. So उसमें भी अगर रहे तो हम definitely update करें। So can you please repeat the CDSL trade? Yeah, so CDSL is a STBT idea. CDSL FNO segment में आ गया है। So CDSL would be a STBT trade, sell in the range of 1605 to 1612 futures। 1640 का स्टॉप लॉस रखे, 1560 के टारगेट के लिए। I hope the levels are clear now, Anuj. Yes, sir. So Bharti Airtel. Within the telecom pack, one of the strongest counter and relatively stable counter in this market turmoil. अगर हम देखें तो पिछले काफी हफ्तों से एक रेंज में है,
करेक्टिव मूव हमने देखा था फ्रॉम 1700 लेवल्स टू 1580 1550, बट पिछले 4 से 5 हफ्तों से एक रेंज में है. नीचे 1580 का सपोर्ट है, ऊपर 1620 का हर्डल है. तो सेटअप वाइज ऐसे मार्केट में डेफिनेटली एक जो सेफ्टी है ऐसे काउंटर्स में है. सेटअप वाइज 1570 1580 एक मेजर सपोर्ट जोन है. ऊपर में 1620 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम रहेगा टुवर्ड 1660 1680 1720 के लिए. So personally अगर किसी को बाय करना है, वेरी गुड एंट्री पॉइंट टू एड इट फ्रॉम 3 to 6 months व्यू. इमीडिएट बेसिस पे रेंज में 1620 की क्लोजिंग के ऊपर फ्रेश मोमेंटम हमें दिख सकता है टुवर्ड्स 1640 60 के लिए. सो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है सेटअप में. वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम काफी बेटर है. Double zero. ऑल्सो वन मोर जो वीकनेस हमें दिख रही है, काफी आई थिंक उनके कैपिटल स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी वीकनेस है. उसमें अगर हम देखें सीमेंस एबीबी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है. एंड उसमें भी आप सेटअप वाइज देखें सो काफी सेक्टर्स वाइज में काफी प्रेम में ही है. उसमें अगर हम स्टॉक ऑप्शन के थ्रू देखें, जैसे हमने गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक ऑप्शन दिया था, उसके साथ हम अगर सीमेंस का भी देखें तो हम देख रहे हैं अगर फेवरेबल एंट्री पॉइंट रहेगा तो हम अपडेट करेंगे. पर काफी काउंटर्स वीकनेस में है और वही प्ले आउट करना है हमें. गाइस ध्यान रखिए कि ओवरनाइट पोजीशंस आप जो है लॉन्ग वाली वो हेज करके रखें, दैट वुड बी बेटर. सीमेंस भी अगर हम देखें तो पूरा कैपिटल स्पेस एक फ्रेश वीकनेस में ही है. 6500 के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, वहां से हमने धीरे धीरे करेक्टिव 6007 तक देख लिया है. सो द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे वो 1 या 2 है, बाकी मेजरली 7 to 8 अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. सो ऐसे में थोड़ा सा आप रिलैक्स होके पैनिक मत करिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन को मैनेज करें. एंड इंडेक्स भी हमने ऑलरेडी शेयर किया. बीटीएसटी एज ऑफ नाउ जो है मेजर कोई भी सेटअप वाइज क्लियरली मेजर है नहीं. एससीबीटी हमने ऑलरेडी शेयर किया है. दिस सीरीज हैज बीन क्वाइट वोलेटाइल एंड इट विल बी वोलेटाइल टिल बजट. सो ये वोलेटिलिटी आप लोगों को डेफिनेटली मैनेज करनी होगी एंड आपको प्ले आउट करना पड़ेगा. इसके साथ एक्सपायरी भी चेंज हुई है, सेंसेक्स कब ट्यूसडे हो गई है, तो डेफिनेटली हमें मोमेंटम ट्यूसडे को भी और मिलेगा इंस्टेड ऑफ फ्राइडे. So all in all, lot of factors are changing in the derivative and the overall equity space. So make the most of it and try to be shape up and try to be flexible within the market setup wise. Ideas हमने एक CDI में Infosys दिया है, STBT में CDSL दिया है, गोदरेज प्रॉपर्टी का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, वो ओपन है अभी भी. एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. मार्केट आज में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली ट्राई टू बुक इट, बिकॉज वीकेंड पे वापस क्या इवेंट रहेगी, क्या सेटअप बनेंगे, डेफिनेटली वी कैन सी सम चेंजेस. So try to make the most of the trade within that swing between 9:30 to 3:30. जो भी major swings out आपको हो पा रहे तो वो करें. And that would be a suggestion from our side. If there are many queries, Anuj, we can take couple of queries and try to help out with that. Anuj, I think you're on mute. I can't hear you. Apologies. Sir, keeping portfolio bare minimum at 10% of capital and rest intraday swings. Suggest if this is the correct approach. Can you just repeat? Keeping portfolio bare minimum at 10% of capital and rest in intraday and swings. Okay. So if I see if someone has asked this query, generally what we advise is wealth is created through portfolio building in the long term, and trading is more of a regular churning process. So I would advise, if you have suppose X amount of 10 lakhs rupees or 100 rupees, so definitely would advise better to go with a long term equity for 50%, and the rest 30 to 20% can use for trading. So that is the general approach that we suggest for a medium to long term investor to trader. If you're a hardcore trader but still not spend more than 25% of the total capital on the trading, because trading is generally quite volatile. So आपको पहले स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच रखना पड़ेगा. 25 से 30% आप डिप्लॉय करें आपका टोटल कैपिटल का ट्रेडिंग में. बाकी स्लो एंड स्टेडीली आप इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनीज में फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. Correct next Friday 4 p.m. Arpit sir ka section on option strategies part 1, and then we'll have another session options advanced option strategies. So हमारे total 2 sessions हो गए Arpit sir के, and continuous 2 Friday. We are announcing the event will be scheduled by Monday. Coming to the next question, sir, JSW Energy hold at 560.
Yeah, just as before this query, just to add, as we are talking about the option strategy, guys, option strategy, current market scenario is one of the most effective tool, guys. The way the better you learn it, the better it would be for you guys for a trading journey in going forward. अगर हम पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें तो काफी वोलेटिलिटी हमने देखी है, निफ्टी में 200-200 पॉइंट के स्विंग, बैंकिंग में 400-500 पॉइंट के स्विंग्स. सो आई थिंक डेफिनेटली जो सेशंस हमारे होने वाले गोइंग फॉरवर्ड, दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल. एंड स्पेशली ऐसे मार्केट में जब काफी तूफानी चल रही है, काफी वोलेटिलिटी है, strategies would be our best savior to play out these swings. Coming back to your query, JSW Energy, right? Correct, sir. Yeah. So similar from the mid-cap space, the downtrend is intact. We have seen a breakdown on weekly and daily time frame. Weekly scale पे low rise बना रहा है, daily scale पे भी low rise structure intact है. जो previous एक major support zone हुआ करता था 600, वो स्टॉक ऑलरेडी वहां से 10% नीचे है. सो आई थिंक सेटअप वाइज एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन जो है जहां से रैली शुरू हुई थी टुवर्ड्स 515 520 एक माह तक वहां पे आके आ सकता है. सो एज ऑफ नाउ अभी भी वीकनेस ही है. 538 का करेक्ट होकर 520 तक आ सकता है. सो मेजर हर्डल है 550 का, नीचे में सपोर्ट है 520 का. सो ओवरऑल बाइस नेगेटिव है. जस्ट टू गिव एन अपडेट ऑन द पुट दैट वी हैव गिवन फॉर Godrej Property, we've seen a move of 70 from 73 in Godrej Property put. Just an update from our side, 82 83 levels from 73 levels. So market जैसा है हमें उसके साथ play out करना पड़ेगा. Yes, in every stock we cannot go through the puts, but at least जो opportunity है हमें we have to make the most of it. And so this will be the last query for the day. Sir, I want to hedge my long exposure in DCB Bank. How do I do? Does DCB Bank have puts to buy? So sadly, I think DCB Bank is not in the F&O space. It is in the cash space. But generally, what happens when जो counter F&O में नहीं होता, आप उसको आप totally hedge नहीं कर सकते हैं, because that is the issue. But if we see oral setup wise, so better है, क्या कर सकते हैं आप? या तो आप जो cash में उसको hold करें, या तो आप थोड़ी पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर ले अगर एक मेजर लेवल टूटता है. सो हमने जो डीसीबी के बारे में बात किया है, 110 का एक मेजर सपोर्ट है. 110 ब्रीच होता है, सो बेटर टू एक्सिट दैट पोजीशन फ्रॉम द कैश सेगमेंट. डायरेक्टली आप इसको हेज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट इन द एफएनओ सेगमेंट. So guys, that will be all. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you, Arpit sir. We have shared one trade, that is CDI Infosys, and another one was CDSL. So please keep this on watch, and that will be all for the entire week. Have a great weekend ahead. See you again next week with a fresh start. Thank you everyone.